So we were doing Shidhu Dhatu the last time, and so we'll resume from here. Sutra 351. Swarti Suti Suyati Dhuyudita Idva. After Sri Dhatu, Shung Dhatu, Dhung Dhatu, and after dhatus that have the indicator letter U, it is optional. So Shidhu has the indicator letter U, Trivikrama U. So wherever it is applied by Ram Dhatu ke, it becomes optional. So Shidhu plus Dip Dhatu Puramat Sirvuteshe. So first of all we insert it and Lagu Dvasya Govinda and Itase Lopa iti. So we get Asedhit. We get Asedhit. Okay. And in Tam we get Asedhishtam. Uh, When we don't apply it, then we apply 352. Vishnu Janantana Amanitam Vrishnendraha Sau Parapade. Anit dhatus which end in Vishnu Jana, like Shidhu ends with Vishnu Jana, and it's Anit, like we are doing the Anit Paksha. It takes Vrishnendra when C, which is followed by a Parapada Pratyay follows. So we have Shidhu, Dhatu, Dip, Dhatu Puramat, and Sirbhuteshe. So now we're not applying it, so the Dhatu becomes Anit. Anit means the Dhatu which doesn't take it. And then we have C followed by a Parapada Pratyay. So we will apply Vrishnendra here in the Prakriti. So we will apply Vrishnendra to E, Rama. So Idvay se I. And then it has no. Ase se bhyam it tipsipo is applied. We bring it. And then Yadav Matra Hari Kamalam is applied. So Dha becomes Ta because Sa is following. And we get Asait Sit. Vishnu Dasa se Hari Kamalam Virame. Asait Sit. So we get two forms. Asedhit and Asait Sit. Then Vamana Vaishnavabhyam Serharo Vaishnave na Tvitaha. C is deleted when it comes after a Vamana or a Vaishnava and a Vaishnava follows. But C is not deleted when it comes after it. So we'll do this, we'll apply. So this Vamana Vaishnavabhyam Serharo Vaishnave na Tvitaha. Then Harighosha Tathor Dho Dhavarjam also. Tha and Tha changes to Dha after any Harighosha except the Tha of Tha. For example, Shidhu, Dhatu, Tam. So one form we made earlier, which was Asedhishtam, and another form when it is not applied. So first of all, we apply this Vishnu Janantanam Anitam Vrishnendra Sauparapade. We apply Vrishnendra. And then we apply 353 Vamana Vaishnavabhyam Sirharo Vaishnave Natvitaha. By that we delete C because Dha is Vaishnava and again there is a Vaishnava ahead of C. So we delete C by 353 and then Harighosha Tathordho Dhavarjam. After Harighosha Ta or Tha becomes Dha. So after Harighosha Dha, Ta becomes Dha. And then Harighosha Vishnudasasya no Vishnudasa Vishnudante Harighosha cha Harikatha is applied. So we get Asait Dham. Asait Dham. So in this one, we use the second option of that Sutra 61, Vishnudasa Vishnudante Harighosha cha Harikatha. Because we have a Harighosha following, Dha, and we have Vishnudasa. So Vishnudasa becomes Harikatha. This is the second part of that Sutra. Vishnudaso Vishnudante Harighoshe cha Harikatha. Harighoshe cha. When a Harighosha follows, then Vishnudasa becomes Harikatha.
So this is the usage of that second one in that 61 number sutra. So we get Asaidham. Similarly, you can do the rest of the forms for Bhutesh Parapada. In Karmani, Shidhu, Ta, Dhatupuramad, in Bhuteshate Bhav Karmano, Lagudavasya Govindaha, Inasto Haraha. So we get Asedhi. Asedhi. And then Asedhi Shatam. And but when we don't apply it, then we have the sutra. Ritvayad Vishnu Janante Shraddhavacha. Vaishnavadisi Kamapalo Kapilavatmapade Gamestuva. When an Atmapada pratyaya comes after a dhatu ending in Ridvaya or after a dhatu that ends in a Vishnujana and has an Isha as its Udhava. Like in Shidhu, the dhatu Shidhu ends with Vishnujana, Dha, and it has E Rama, which is an Isha before that. So in such a case, C and Kampala, which begin with the Vaishnava, they are considered Kapila. They are considered Kapila. But when an Atmapada Pratyaya comes after Gamalri Dhatu, this is like more specific, then C and Kampal, they are optionally considered Kapila beginning with Vaishnava. So Shidhu Dhatu is there, Atam is there, 1.2, Karmani. Dhatu Purumat, it is not inserted by Swarati, Suti, Surati, Dhunudita, Idva. And then we apply this 335. Ritvaya, Vishnu Janadeshal, Davacha, Vaishnavadisi, Kamapalo, Kapila, Vatmapate, Gamestu, Va. And by this sutra, Shidhu is considered, sorry, C is considered Kapila. C is considered Kapila. And thus we don't apply Govinda or Vishnindra by Ishasya na Govinda Vishnindra Kansarishu. Kapila, Kansari, they are same. So then we just apply Yadava Matre Harikamalam and we get Asit Satam. Asit Satam. So one form was Asedhi Shatam and one form is Asit Satam. So in this way, you can do the whole, um, all the forms. Then Kri, Sri, Bri, Vri, Stu, Dru, Sru, Shrubhya, Eva, Dhokshaja Matre, Net, Annebhyasvanebhyo Pit. Meaning, when an Adhokshaja Pratyay follows, na Adhokshaja, only the following dhatus do not take it. All other dhatus take it even if they are unit. So, Dukri Karne, Kri Hingsayam, Sri, Bri, Bri, Bring, Brings, Tu, Shtu, Dru, Sru, Shru. All these dhatus, they do not take it. All the other dhatus, they take it even if they are unit. In simple words, so Shidhu is there, and then so Sisheda, Sishidhatu, Nalatus us will be done easily. Then when Thal is there, uh, so because of this restriction, it is always applied when an Adhokshira Pratyay follows, just to make it simple. Now see, Shidhu Dhatu was wet. It was optionally taking it by that sutra. Swarati Suti Suyati Duyundita Idva. But now the sutra says 356 that now okay, when an Adhokshira Pratyay following, then all the dhatus will have to take it like permanently, except for these dhatus mentioned here, Kri, Sri, Bri. So that's why there is no optionality here. This Shidhu will take it here, wherever it has to be applied, like Thal and all. Then Balakalki, two forms.
one it, one not it, unit, sedishishta, sitsishta, and like that the whole Shuddha Dhatu will be declined. Okay. Then आप कुछ बोल रहे हैं? You're saying something, Jayanta bro? I'm not able to hear. Not audible. माइक तो कनेक्टेड है आपका, और आवाज नहीं आ रही. Hare Krishna. Yes, Roji. Abhis? Yeah, yeah. Yes, yes. So, in the previous Kunt, when we are studying Kunt, then the forms you taught us still, the written over here was still only adhokshas. उसके बाद जो होता है बाल कल्की कामपाल वो सब तो था ही नहीं. हाँ तो वो तो Similarly फिर with this also. वो हमें अपने आप बनाने ना. That we have to do by ourselves. One time unit, one time sit with it. No, in the book, the forms were till adhokshas only. So, but adhokshas तक ही forms बनाना है नहीं या नहीं then नहीं, फॉर्म्स तो पूरा अजित तक बनाना है. We have to make all the forms till Ajita. They have only given because there is something new there. In all the other forms, there is no new rule. That's why. So that means अजित तक सब कुछ forms बनेगा ही. हाँ, all the dhatus, all 180 forms. अच्छा. हाँ. Jiva Goswami is not repeating whatever is like old, getting old. He's just going with the new sutras, new rules, mostly. Otherwise, the book will get so big. Yes. Thank you. Gada Vyaktayam Vachi. Next dhatu is Gada Vyaktayam Vachi, which means to speak, to say, to tell. Gada Gada. Uh, yeah. So Gada. So like Gadati, Gadataha, Gadanti, Gadyate, Gadyate, ityadi. Then Vishnu Janadir Laghur Ramasya Vrishnendra idadau sau parapade. Va parapade. If a dhatu begins with Vishnu Jana, like Gada begins with Vishnu Jana, its Laghu Arama can optionally take Vrishnendra when C, which begins with it, follows, provided C is itself followed by a Parapada Pratyay. Basically, there has to be C, which is preceded by it, and then C has to be followed by a Parapada Pratyay. So, Gad plus Dip, Dhatu Puromat Sirbhuteshe, it Ram Dhatu ke. So, by this rule, optionally, we will apply Vrishnendra. So, Vishnu Janadri Laghura Ramase Vrishnendra. Vrishnendra idadau sau va parapade. So once we get Agadit and once we get Agadit. That's all. We just apply Vrishnendra once. Nothing new. Agadit and Agadit. Okay. Agadit and Agadit. Then Uddhava Ramasya Vrishnendra Nrsimha. Uddhava Arama. If there is Arama at Uddhava, second last letter, then it will take Vrishnendra when there is a Nrisingh Pratyay following. So Gad plus Ta, this is Karmani, Bhutesha.
Dhatupurumat in bhuteshte bhav karmano. In is Nrsimha. So we apply 358. Udhavaramase Vrishnendro Nrsimhe. So a becomes a. And in asto harha, so we get agadi. Agadi. Similarly, adhokshaja 1 1 parapada. Gad plus null. Reduplication ka varga narasya cha varga. And Uddhavaramase Vrishnendra Nrsimhe, we get Jagada. These forms are also used in Bhagavatam. Jagada and all. Jagada, which means like he or she spoke. She spoke. Past tense. Jagad. Scriptures mostly use Adhokshaja, like uh, to indicate past tense because it is Adhokshaja, right? Paroksha. The speaker didn't really witness it. It is all coming through Shruti Parampara, through hearing and hearing. So mostly the past tenses are used in Adhokshara. Like Bhagavad Gita, Uvacha, Uvacha, again and again, Uvacha, Uvacha, Krishna Uvacha, Arjuna Uvacha, Sanjay Uvacha. All are uh, Adhokshara pratyas. Not witnessed by the speaker, right? The past, not witnessed by the speaker. That is the translation of that Adhokshara Sutra. Yes, But yes. Prabhuji, Sanjay witnessed the Gita. But Vyasdev wrote it. Yes, yes, Vyasdev compiled it. Ji. Then Uttamanal Nrisingha Karya Karo Va. The Uttama Purusha, that's like Uttama Purusha first person, Nal, Nal Athusus Thal Athus A Nal 3.1. The Uttama Purusha Nal only optionally causes the Nrisingha Karyas to take place. So that 3.1 is only optionally, it will cause the Nrisingha Karyas to take place. Like Uddhavaramasa Vrishindro Nrisinghe. Sutra says when a Nrisingha Pratyay is following, then Uddhava A will become A. This is a Karya of Nrisingha Pratyay. Now 3.1 Nal will cause such Karyas optionally. So once it becomes Jagad and once it remains Jagad. Okay? Once Nrisingha Karya takes place, once it doesn't. That's all. Jagad, Jagadatuh, Jagaduhu, ityadi. Then the dhatu is done. Hmm. Prabhuji, Yes. actually, I wanted to confirm, uh, like I was trying to, in my mind, comprehend the Adhokshaja Parapada of the Gada 1.3. So, like the Nara of Ga got duplicated to Ja because of this sutra, uh, which was Kavargasya Kavarganarasya Kavarganarasya chavarga. Chavargaha. And then we apply the Shap Pratyay, then we apply Us. But how did am not able to remember how did the Shap got deleted? Because it is Jagat What is deleted? Shap, or maybe not deleted or whatever. No, If it but was there, where is Shap? Shap नहीं आना था क्या? नहीं नहीं शप कृष्ण धातु के ना अधोक्षज हाँ, कृष्ण धातु के. अधोक्षज राम धातु Sorry, का yes, yes, not apply. हम्म
Okay, this much only for today. प्रभु जी भागवतम मनवेश हम्म, हम कौन सा कर रहे थे? विच कैंटो? 10th श्लोक चैप्टर 1 yes प्रभु जी श्लोक maybe 5 प्रभु जी 5 ओके हिंदी इंग्लिश देवनागरी और इंग्लिश which one shall I show? देवनागरी में English for me. So I can do this if you can manage this. Can you? Like Hindi and English both. Yes, bro. Okay. पितामहा में समरे मरंजयैर् देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः दूरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्म यत्प्लवाः. Hmm. So this is Parikshit Maharaj Vacha. He's speaking. Rajo Vacha. So he's saying, let's begin with Satami. Samare. This is not summer, hot season. Summer. In the summer season. No, no. Samara refers to battle. Ranabhumi. Yuddha Mandal. Yuddha. So Samare refers to Yuddhe. Not the winter, summer. So on the battlefield, in the battle, Samare, see, whenever there is like, first of all, if there is vocative, Sambodhana, so we have to keep it first, most of the times. And then if there is also Saptami, then mostly it comes in the beginning also, like Saptami. Mostly. So Samare me पितामहाः मे इति किम मानस प्रभु मे इति किम to me of me संस्कृत of संस्कृते वदतु मे इति किम मे इति किम षष्ठी विभक्ति आहा तो षष्ठी प्रथमा तो मे इति कः रूपः वास्तविक रूपः कः किम मम 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 उत्तमम् उत्तमम् तो मे इति मम पितामहाः मम इति कस्य वदतु मम राज परीक्षित महाराज ओके परीक्षित महाराजस्य सो मम पितामहाः अमरंजयैः देवव्रतादि आति देवव्रताद्यातिरथैः तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं यत्प्लवाः वत्सपदं कृत्वा अतरन् स्म यत्प्लवाः वत्सपदं कृत्वा अतरन् स्म meaning in the battle of Kurukshetra my grandfathers
Pitamaha, they took shelter of Shri Krishna, who was like the boat. Yat Plava. Yat Plava is also adjective for Pitamaha, Bahuvachana, plural. 1.3. What was Yat Plava? Plava Yat means Plava refers to Plava refers to boat, Nauka. Plava. Yat Plava, Plava. So, Samare me Pitamaha Yat Plava, who took shelter of the boat of Shri Krishna, boat like Shri Krishna. So, what happened? They Kaurava Sainya Sagaram, Duratyayam Kaurava Sainya Sagaram. So, in the battle of Kurukshetra, the army of Kauravas is considered like an ocean, Kaurava Sainya Sagaram, which is insurmountable, unsurpassable, undefeatable. Duratyam, very hard to defeat. So, but why it is hard to defeat? Because of Amarangjayaihi, Timingilaihi, Dev Vratadyati Rathaihi. Because of the Atirathis like Devvrata, Bhishma, Drona, Karna, ityadi. And they were all Amarangjayah. They all had conquered upon or on demigods. They all, in some phases of their lives, they have conquered upon the demigods. Amarangjaya means those who have defeated demigods. And Timingilai means those fishes or big sharks or fishes, Timingila, whose names are Timingila, who eat the small fishes who are called Timi. So Timi is one category of fish, and Timingila is another category of fish. So Timingila are those fishes which eat Timi fishes. You see, like big sharks eating small fishes, like that. So the army, the soldiers, the Maharathi, the Atirathis on the Kauravas sides, like Bhishma, Drona, Karna, Ityadi, they were all such Amaranjayas, they were all such Timingilas, Atirathas. So the Kaurava Sainya Sagaram, because Sagaram is a water body, that's why they are all compared with the big sharks, Timingilas, who were all floating, wandering throughout the Sagara. And if anyone would like to come within the water, would be finished within seconds. So it was such Duratyam. That's why it was undefeatable uh, side in Kurukshetra, the Kauravas side. But because my grandfathers took shelter of Shri Krishna, Yatpalava, that's why Vatsapadam Kritva. So Vatsapadam means Vatsapada Paryantam Kritva. Vatsa means a calf, baby calf, and the hoof of a baby calf. So when a baby calf steps over, let's say, a wet mud, so it will make a very little hole there of the hoof print. And so the whole Kaurava Sanya Sagaram got shrunk to that water, little water, maybe 5, 10, 15, 20 ml of water contained in that footprint of that calf. Why? How? By taking shelter of Sri Krishna. So, Vatsapadam Kritva. So, basically, Krishna made that whole Sagara very small, very easy to defeat. It's like a metaphorical usage, Vatsapadam Kritva. And then Ataran, Sma. And then they all crossed over that ocean, that obstacle, uh, the Kauravas army. Yes, Prabhu. Prabhuji, वत्सपदम् इति शब्दः किं हुव स्थानं
by the hooves, Vatsa stepping on, making space. How was it, Prabhuji? I couldn't able तो to understand. वत्स पदम, वत्स काफ पदम, हूफ कृत्वा, Hmm. मेकिंग। Means, Prabhuji? वत्स पदम कृत्वा, वत्स की तरह, जो वत्स के चिन्ह की तरह बना दिया। तो उस बड़े विशाल सागर को श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी अनुकंपा से, वो पूरा जो सागर है, वो वत्स पद पर्यंतम, ये बेसिकली यह द्वितीय का प्रयोग हुआ है, सेकंड एंडिंग वत्स पदम। इट मींस वत्स पद पर्यंतम, वो इतना छोटा बना दिया जितना छोटा एक बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे में पानी आता है। तो पर्यंतम शब्द हमें समझना होगा यहाँ पे, पर्यंतम, है ना, उतना सीमित कर दिया। सीमित कर दिया। हाँ, सीमित, ये पर्यंतम आता है यहाँ पे। ये संस्कृत में हम फोर्थ चैप्टर व्हेन वी विल स्टडी कारक, सो देन देयर विल कम अ सूत्र, काल अध्वनो, टू इंडिकेट लाइक अ measure of time, to indicate a measure of distance, measure of space, we use second ending. Okay. It will come in fourth chapter. So this is that usage. Vatsapadam means Vatsapada Paryantam. And Prabhuji, what about Ataran? Ataran, Chhatri Pati used? no, 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 no. Diptaman, Bahuvachana. An, Diptaman, बहुवचन. ये भूतेश प्रत्यय. yeah, Bhuteshwara. Atarat, Diptam, Atarat, Ataratam, Ataran. Ataran. Prabhuji, Ataran धातु किम अर्थम? Three, three dhatu, three, त्रिधातु, तीन three धातु. dhatu, three dhatu, Three means? three plavana taranayo. Tarati, tarata, taranti. अच्छा, three तो तारण, तार देना. Yeah, yeah. इसमें दिखा नहीं रहे, पर वो मतलब ये री होते हैं, बड़े वाला री होता है, त्रिविक्रम री, त्रि, तो वो धातु होता है। ओके. थ्री धातु तो पर फिर इसका प्रभु जी आतरण कैसे बन गया फिर? हाँ, अगर त्रि धातु है तो फिर इसका आतरण. आतरण कहाँ है? अतरन, अतरन, अतरण, धातुपुर, अतरण, अतरण. धातुपुर मत। जी, ओके. धातु, यस. धातु. अतरन है ना, अतरत, अतरताम, अतरन, अभवत, अभवताम, अभवन, उस तरह से, क्योंकि पितामह बहुवचन है ना। तो पितामह. किसने पार किया? कौन तर गया? मेरे पितामह तर गए। तो कर्ता कौन हुआ तरने का? पितामह हुए ना। तो पितामह बहुवचन है, तो इसलिए अतरन भी बहुवचन है। कर्ता क्रिया एक जैसे चलती है, वचन एक चलता है, सेम वचन है। विमोचन, यस. कृत्वा अतरण. तो वो एक बारी त्रि धातु का अर्थ क्या था? त्रि प्लवन तरणयो, प्लवन तरणयो। आपके पास धातु पाठ है ना? धातु पाठ में देखना आप, आपको भेजा होगा आई थिंक, सब ग्रुप में या कहीं तो भेजा बस है। वो हाँ, वो धातु पाठ शीट्स में में आप आपने भेजा था. हाँ, धातु पाठ में आप देखिएगा, या कोई वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, अष्टाध्याय वगैरह। डन करो. इफ यू डोंट हैव धातु पाठ, आई कैन शेयर अगेन। Anyhow, okay, so I just came back today from traveling, so I'll just stop here. And yes, so resume revising, practicing, memorizing. Okay. Hare Krishna. Present sentence. Hare Krishna. प्रभु जी,
यस ब्रो। प्रश्नानि। हाँ, प्रभुजी प्रश्नानि, प्रश्नानि। प्रश्नानि पृच्छतु। एकमेव। प्रभुजी क्वेश्चंस। आम पृच्छतु। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। उन्हें एक डाले हुए थे प्रभुजी, अब आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है, लैग कर रहा है वो। अब आ रही है प्रभुजी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अब नहीं पूछ नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। सकता हूँ प्रभुजी 4 प्रश्न, यदि उचित लगे। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम है प्रभुजी। अब आ रही है आवाज? हरी बोल। प्रभुजी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। प्रभुजी अब आ रही है? प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है। प्रभुजी प्रभु, कुछ प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्रभुजी अब ठीक आ रही है? बोलिए। एक प्रभुजी एक वो एक व्हाट्सएप एक पे हाँ हाँ, एक प्रश्न लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे। बोलिए बोलिए। ठीक है। वेट प्रभुजी, मैंने लिखा हुआ था। अच्छा, चलो एक प्रश्न प्रभु छोटा सा, कि प्रभु जी जो यज्ञ शब्द है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? सम से यज्ञ, सम से यज्ञ, सम से यज्ञ। इसका अलग अलग उच्चारण है। साउथ साइड में ये जना जना वाला भी चलता है, ज बोलते हैं, फिर ज्ञ बोलते हैं साथ में। तो वो भी सुनने में आता है। अब कुछ लोग उसको ही बोलते हैं। और पर्सनली मैं थोड़ा नेजल इसको प्रयास करता हूँ, नेजल बोलने का। नाक से, अनुनासिक। यज्ञ। यज्ञ नहीं, यज्ञ। थोड़ा अनुनासिक। आई यज्ञ, ट्राई अनुनासिक वन। यज्ञ, नॉट यज्ञ, बट यज्ञ। वो यज्ञ। वो लगता है ज्ञ है, पर वो ज्ञ नहीं है। यज्ञ। यज्ञ। थोड़ा नेजल है। सो आई ट्राई द यज्ञ। नेजल वन रेदर देन गोइंग फॉर जना, यजना। साउथ में मैंने नोटिस किया है, वहां पर जना जना बोलते हैं, यजना। इस प्रकार से अलग अलग वेरिएशंस हैं इसमें। पर जैसे प्रभु जी, पर जैसे प्रभु जी शब्द है तो वैसे तो ऐसे नहीं लगता, यज्ञ, यज्ञ जब भी आता है जैसे। इसमें मुझे भी थोड़ा इसमें और किसी सीनियर को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत जो लिखा है वही हम पढ़ते हैं। कुछ चेंज नहीं होता है इसमें। तो जी। उस यस। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज और ज्ञ दोनों उच्चारण अलग अलग, क्लियर क्लियर होना चाहिए, यज्ञ। इस प्रकार से। तो ये इसका एग्जैक्ट थोड़ा और एनहांस्ड वर्जन, या किसी और एडवांस्ड किसको पूछना पड़ेगा जो उच्चारण में और ऊपर है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। यस यस। कृष्णा शब्द में वो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण, वो तो तेलुगु स आ गया उसमें। वो सारा कृष्ण। मूर्धन्य सेरिब्रल, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, मूर्धन्य ह्री, मूर्धन्य अण। तो सारा मूर्धा से निकलेगा कृष्ण। 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 वो तालव्य श नहीं है, श नहीं है। और ये, हाँ, बोले नहीं सर। पीछे जीभ को और पीछे टच करना है। श। कृष्ण।
Krishna. हाँ, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं। तो इसलिए इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, भक्त भक्त बन जाओ, ज्ञानी मत बनो, ज्यादा ज्ञान लेंगे तो बस हम पागल हो जाएंगे। तो तो इसलिए इसको पता करेंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमने चर्चा की ही नहीं, छोड़िए। एंड प्रभु जी वन मोर कंफर्मेशन आई वांटेड कि प्रभु जी एक हफ्ते में 20 सूत्र याद करने दें होते हैं। आप करते जाइए अभी, 20 25 20 ही 30, क्योंकि मैं आपके आई थिंक आपके रूप याद हो गए सारे। प्रभु जी प्रयास तो है कि मतलब किया तो था। जी प्रभु जी आप नहीं, पूछ लें, टेस्ट वो कुछ मैं ले लें प्रभु। फिर मैं जब सुनूंगा तो फिर उस समय आप भूल जाते हैं, आप नहीं हो पाते। तो तभी प्रभु जी आप टेस्ट ले लिया कीजिए प्रभु जी, you पता लग जाए always, कितनी पानी में है। yes, yes, Bharwit test at least. तो नेक्स्ट क्लास में आपसे रूप सुनूंगा, अभी तक के जितने भी रूप हैं, भू से लेके शिधु गद धातु तक, उसमें मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो आप ये सारे यस रूपों प्रभु में से एक बार याद कीजिए, फिर जी। सूत्र पे भी आते हैं। अभी थोड़ा सा ये अनप्लैंड था मेरी यात्रा, पर आज ही मैं 18 18 डेज के बाद वृंदावन धाम में आया हूँ। अगेन हम्म। मायापुर जाना है अभी विद इन अ वीक फॉर अनदर 18 डेज। बट देयर आई विल मायापुर बी, एकदम। या बट आई विल बी एबल टू डू द क्लास देयर। प्रभु महाराज के साथ ही। नहीं नहीं, वहाँ MI मायापुर इंस्टीट्यूट में ओ, संस्कृत टीचिंग। प्रभु जी बस 18 दिनों के लिए। वहाँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा संस्कृत कैंप थोड़ा छोटा करते हैं, हरे नामामृत टच नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, वो कुछ क्रैश कोर्स टाइप। प्रभु जी पास में वो उसके एमआई के पास में वरुणाश्रम कॉलेज है, वहां पे मैं था 2 महीने के लिए। अच्छा है वो। मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ किसी को, पर चैतन्य महाप्रभु को ही जानता हूँ और MI को जानता हूँ। Uh, this 100 sutras that you had dedicated for Maharaj, उसमें वो vocals किसने दिया है? The lady basically, she's because my she's my god sister, lives in Vrindavan, and basically she's from South India, but she got married in Vrindavan. हाँ, अच्छा है ना वो? हाँ बहुत very खतरनाक। उसको very like, हर 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 सेक्शन उन्होंने अलग राग में गाए। हाँ, तो बेसिकली 14 या 15 राग में वो सारा सिंग किए। हम्म, एंड प्रभु जी आप मायापुर कब जा रहे हैं वैसे? 17। अच्छा आप 17 को जा रहे हैं। जी, 17 जनवरी, एक हफ्ते बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ ऑल द धातु रूप्स। चलो प्रभु जी मैंने सोचा था, मैं वृंदावन जनवरी के एंड में सोच रहा था, तो मैंने सोचा था आपसे मिल लेंगे। अब तो अब आप जा मायापुर रहे में। हैं। चलो so ठीक आई विल है। Prabhuji, रिटर्न ऑन February 6th। February 6th। next class will be in Tuesday, Prabhu, so that Yeah, according we'll keep Tuesday and Saturday, to and if I'm not available, then you come together, you do study revision, so we keep the Tuesday and Saturday. यस प्रभु जी। thank you, Prabhu. Okay, thank you, Thank you. Hare Krishna। यस प्रभु जी, दंड में प्रणाम प्रभु जी।